सेक्स मिलेगा। फिर तो रोज मिलेगा रोज। रोज मिलेगा है ना। वो बात अलग है। बैटरी तो चार्ज कर ले प्रैक्स। निकाल हालैंड। प्रैक ओए ओए छोले प्रैक्स को भी कन्वर्ट कर दिया डॉकर में। शिट, मैंने स्ट्रीम का नाम कुछ अच्छा नहीं रखा है। फक। क्या रख दिया नहीं, स्ट्रीम का कुछ नाम? सुना नहीं सेक्स था वेक्स ये लिख रहा। दिया क्या? देख तो जाके मैक एंड चीज नाम रख दे स्ट्रीम का नाम। तू स्ट्रीम का नाम तो देख। प्रैक्स के मैक एंड चीज। मैक की फोटो डाल दे। प्रैक्स का नुन्नू चाहिए ना। 3 दिन से यही नाम चल रहा है स्ट्रीम का। फ्लेक्स करना। अरे यहाँ तो स्ट्रीम कर दे साले, रियल टाइम देखूंगा मैं। हाँ रुक जा, इसको शेयर तो करने दे। लोगों को मेल लिखने नहीं आते भाई। उस बंदी को पता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसको पूरा फ्रेशर मेल। है अबे तो यार बात फ्रेशर की नहीं है लेकिन फिर यार। भी हाँ फ्रेशर है, फिर भी मेल लिखना तो आना चाहिए। भाई तू मेल किसी को लिख रहा है प्रैक्स, तो भाई तू बिना सब्जेक्ट के कैसे लिख सकता है? और फिर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज सब्जेक्ट इज मैंडेटरी इन मेल। यार ये कैसा बोला question नहीं, है? नहीं जरूरत नहीं है, मत लिखो, मेल ही मत लिखो तुम। मैं 2 मिनट छोड़ तक दो। तो यही सोच रहा था कि इस सवाल का मैं जवाब कैसे दूं। अरे यार बहुत अनपढ़ लोग हैं यार सच में भाई। भाई प्रैक्स को भी डॉकर पे कन्वर्ट कर दिया भाई मैंने। चले प्रैक्स को तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुल्ला बनाऊँ उसको। पहले तू, तेरे को डॉकर ले गया पाइस पार्क पे, तेरे को तेरा इतना आसान सेटअप देख के एकेएस को ले गया मैं पाइस पाइस पार्क पे, मतलब उस पे जुपिटर नोटबुक पे। और अब प्रैक्स को भी ले गया मैं जुपिटर नोटबुक पे ऑन डॉकर। प्रैक्स को तू नोटबुक वोटबुक, मतलब मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्स को मौलाना बना दो, अब्दुल मौलाना आजाद, प्रैक्स आजाद, प्रख्यात आजाद। साले यहाँ तो स्ट्रीम कर, वहां लेटेंसी आएगी। अबे भाई वो गेम हैंग हो गया मेरा स्विच करने के चक्कर में। डुअल मॉनिटर सेटअप कैसे? तू तू क्यों नहीं बनाता डुअल मॉनिटर सेटअप? अच्छा टेबल भी तो टेबल छोटी तो है तेरी। छोटी है यार, तूने देखी तो आज। नेक्स्ट इसी तो टेबल है यार ये। अरे कोई एक्स्ट्रा चेयर है उस पे पीसी पटक दे और उसके ऊपर मॉनिटर रख दे जैसे मैंने रखा हुआ है। वो रखी थी, पापा उठा के हम्म ले गए पापा उठा के। मेरे पे दो टेबल थी, तो मैं सोचा था कि हम्म। दूसरा मॉनिटर उस पर सेट कर दूंगा, लेकिन वो दूसरा मॉनिटर मैंने भी भैया को दे दिया। उनको चाहिए था इसलिए, उनका मॉनिटर खराब हो गया था। ऐसे तानवीर वाले काम करोगे तो यही हाल होगा। तो वो टीवी देख के गए हैं यार, मेरे को टेलीविजन एलईडी टीवी आउट एंड्रॉइड वाला। चल गया ना गेम। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था मैं भूल गया। फोटो खींचना। 4 साल पहले ये गेम खेलनी स्टार्ट की थी ना हमने, सब भूल गया मैं। ऑब्जेक्टिव आता किससे था इसमें? मेरे को थोड़ी याद साले, ये तो कैमरा खोल रहा है। कैमरा किससे आता के है? दबाइयो। कैसे ऑब्जेक्ट? हाँ भाई तुझे याद है। इट माइट बी ऑन द टेबल, ये हो गया। और फाइंड द टैरट कार्ड। मैमी नैनी सप्लाई लिटिल, दे मस्ट बी हिडन बट हु नोज वेयर। आई कुड स्टार्ट लुकिंग इन माय पेरेंट्स रूम। अपनी माँ बाप के रूम में जाके देखी, कुछ और ना मिल जाए उसको। कॉन्डम कॉन्डम। वो तो उस समय क्या ही उनको होते तो होंगे। पत्ते। पत्ते ढूंढने हैं ना इसको। देख दूध के कैनिस्टर रखे हैं, यामाहा पे लेके आते थे पहले। याद है तुझे? खराब नहीं हो जाएंगे कैनिस्टर? पता नहीं भाई, क्या फ्रिज पता नहीं है है। इसमें वाइन वाइन रख रखी हो इन्होंने। वाइन उसमें थोड़ी रखेंगे साले। भाई कुछ पता नहीं है इन लोगों का। मेटल में वाइन थोड़ी रखेंगे। भाई क्या पता उसमें कुछ और ही रखा हो। ये तो किचन है, ये तो इसका परमानेंट होम किचन ही है वैसे। न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं ना। पूरा घर ही किचन है मतलब। न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, चल एक बार और। पढ़ा नहीं था न्यूज़पेपर हमने। साले असली लाइफ में तो पढ़ता नहीं, गेम में पढ़ रहा है। अबे Fighting in ऑब्जेक्टिव है। Normandy. Victorious Germanic counterattack. हाँ चल निकल। ऑब्जेक्टिव में बोलेंगे तो गांड भी बना लेगा। अब बोलेंगे तो करना पड़ेगा यार ये सब। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब। अरे लाइट किससे जलती थी? ई
जरूरत नहीं है अभी इसको। कैमरा क्यों निकाल दिया इसने? मैं भूल गया लाइट किसे जलती किससे है। स्पेस से शायद। स्पेस दबाइयो। नहीं इस पे से कुछ नहीं हो रहा भाई। ठीक है तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं। तो इसकी माँ बाप का रूम कौन सा है? माँ भाई का चूतिया। ये क्या है? 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. ठीक है जाना उसको वो करना, डेवलप कर ले। किसको? वो डेवलप करते जो हैं। मिला है अभी रोल, फोटो रोल मिला है ना तेरे को। अच्छा ये इसके माँ बाप यहाँ ऊपर सोते हैं? ये रूम है। दे यहाँ से दरवाजा लगा के जियो। मैं देख रहा हूँ। तू डर गया तू? This is Mummy's jewelry. चुरा के She बेच तो wears पैसा them मिल every जाएगा। day, even though Daddy says it's impractical Rifle and गन पड़ी हुई है। dangerous to show उठा के चला signs ले of जा life ले जा, these भूत को days. मारियो। भाई वो As 4 usual, घंटे she में तो doesn't अपने want to डायलॉग listen कंप्लीट to करेगी reason अभी। and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. ठीक है अब मैं इसको There are छू more सकता and more weapons around, and everyone is scared after what happened. हूँ। इसमें क्या है? Romola, 15th of July 1944. Dear Pardon, Mrs. pardon. Irene, पूरा लेटर I'm writing to पढ़ेगी। let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my मैं इसको room. access What नहीं is कर she पा trying to रहा यार, hide? कैसे होगा? My happy room, उसके happy room में Mummy's है ना? medicine. Will they do her any good? ये क्या है? ये मुझे वो लग रही है कुरान। ये सब क्या है? What? Dear Mother, अरे हटना this is यार, इसकी hard, भी नहीं but I होता have ये। something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. What? Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for Bruh. an explanation, भाई, but कुछ तो instead गड़बड़ I'm लग रही है left with मुझे। more questions. मार्था प्रेग्नेंट थी ना? हाँ बट इसमें जूलिया मेंशन किया है उसने। लेकिन मार्था जूलिया की तरह ही दिखती है ना। वो जूलिया को कहीं वो तो नहीं कर रही थी शायद। हो सकता है, हो सकता है। मिल गया इसको साइड टैरेट कार्ड। ये Here देखिए। are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a ये stupid दोनों game एक to दूसरे की reassure and आइडेंटिटी ले deceive सही कह रहा है। oneself. मुझे लग रहा है उसने इसकी चुरा ली, इसने उसकी चुरा ली। Oneself is sometimes necessary. How can we live? तभी तो लेक पे गई थी वो करने। हाँ ये हो सकता है। This is possible, my friend. It's another possibility. Let's see. Going to happen. अभी क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे होता है ना, कैसे होता है? The white lady go to the ये इसके lake. लिख रहे, मुझे लग रहा है मार्था लाइव है, ये डेड है। हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता। Why they have locked my children room? Find the keys. चाइल्डहुड रूम, चिल्ड्रन रूम। ठीक है। Children Childhood room. children. I found the notes on Dennis Martha handwriting. Dear mother, this is hard but I have found that Julia is pregnant. Go to the Martha. भाई पता ही नहीं चल रहा है इस गेम में अभी तक क्या चल रहा है ना। चलो लेक जाते हैं पहले। तभी वो लोग को लग रहा है कि जूलिया मरी है। हाँ सही कह रहा है तू भाई, क्योंकि भाई जूलिया मतलब इन लोगों को, मैं वही सोच रहा हूँ तब से कि वो प्रेग्नेंट है, तो इन लोगों को पता कैसे नहीं चल रहा कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब भाई उसका जब पेट निकल रहा है तो कोई भी देख के डिफरेंस स्पॉट कर सकता है ना, लेकिन इनके घर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। ये देख इसका पेट निकला हुआ है, इसकी बॉडी अभी तक इधर ही पड़ी है। भाई इसको दफनाएंगे कि नहीं है? पता नहीं बहन जो क्या कर रहा है। शफल। ये क्या हुआ? जादू टोना।
द स्टार्स, इसका क्या मतलब अच्छा है? रुक, मैं आता हूँ, एक सेकंड आता हूँ, क्वेरी लिखो अभी। द हर्मिट, मैसेज The मैसेज। solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. The solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. What is this man? Only one divination per day. अच्छा, ठीक, पहले लेक चलते हैं। Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. AFK, एक मिनट सुन। AFK, कल उसका बर्थडे है, ठीक है, तो चुपचाप आ जाइयो। अभी क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, उसका बर्थडे है ना, तो अभी 12 बजे आ जाइयो, विश करेंगे, उसका मौकने का बर्थडे है। आई होप उसने सुना नहीं है। What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt!
Please, no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. इसके लवर को मार दिया. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. भाई गोली मार दी उसको. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words. चल क्या रहा है यार, this is so fucking confusing. I give you back your words. 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 Now I see through. Okay. Now I see with my eyes. Now I see. Now I see. Now I see. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing,
Identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. हाँ सही कह Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, welcome to the stream. she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. The ceremony is today, so I need a suitable dress. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky.
so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Erik. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's a way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too. There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. Okay. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I'm back with mac I and had it in cheese, my yeah. hand when the soldiers Good. ran off. Delicious. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Yeah. न्यूज़पेपर पढ़ना है. घर ले जाओ भाई. Say goodbye to your sister. Whose number is a prime number or a combination? पता नहीं, देखते हैं भाई. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth.
I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due... No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph "Town on fire" to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? I can save... someone's life? Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange.
Not now. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. I have no reason to call Daddy's command. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this.
Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. वो तूने वो डेथ वाली स्टोरी देखी थी है? उसका लवर मर जाता है ना, उसके लवर ने इसको एक लेटर लिखा था, उसमें इसने फ़ोन नंबर मेंशन किया। जब फ़ोन नंबर That raven is making a big fuss. फ़ोन नंबर पे कॉल किया तो उसको पता चला कि उसका जो लवर था ना, वो एक रेजिस्टेंस के लिए काम करता था, जो Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. जो वॉर के अगेंस्ट में थे। तो उसने उस मतलब जो तो उस नंबर पे जब उसने कॉल किया तो उसको पता चला कि वो एक रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा था, वॉर के अगेंस्ट में था, जर्मनी के अगेंस्ट थे। तो अभी उन्होंने उसको एक टास्क दिया है इसको कि तुम्हारे घर के नीचे से एक टेलीफोन लाइन जाती है जर्मन बेस से कनेक्ट है, वो तुम काट दो तो हम जर्मनी हार जाएगा, मतलब वो जीत जाएंगे कुछ करके, रेजिस्टेंस जीत जाएगा। Commune of San Casciano. वही है। बाकी सीन ऐसा है कि मार्था की जगह पे उसकी बहन मरनी थी, लेकिन मार्था मर गई। ये मरी नहीं थी, बच गई थी, इसकी गोली लगी थी, पट्टी वट्टी बांध के बैठी जिंदा है ये। I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. बट उसकी जगह मार्था चली गई, क्योंकि इन दोनों ने सेम लॉकेट पहना हुआ था, इस पे लिखा था मार्था। कुछ ऐसा ही था, मतलब डेथ का सच पता नहीं चल रहा, स्टोरी क्लियर होगी, अभी सब फॉगी फॉगी है। When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. This is madness. My God.
So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Mother. Your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. सारे जानबूझ के कर रहे हैं कुत्ते. I will succeed in the end. I'm going to enjoy what I deserve. But uncertainty and resistance to change are making my life very difficult. कुछ भी कर लो, ये कुत्ते हैं भाई, ये सारे तो अच्छे हैं गेम वाले. I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. इसको और क्या चाहिए यार, मैं सब तो दे चुका हूँ उनको. इन फोकस प्रॉपर्ली एक्सपोज सब कुछ तो है यार, मैंने इसको इंफ्रारेड भी दे दिया.
अच्छा, ये भी सही कह रहा है तो चल करके देख लेते हैं और क्या। इन फोकस टू क्लोज, ओ सही कह रहा है भाई। आउट ऑफ फोकस है, सब्जेक्ट फ्रेम, अभी सब सही है। सही कह रहा था। चलो ये भी निपट गया। अभी लेक पे जाना है ना, माय पर्सनल ऑब्जेक्ट। अभी लेक पे जाके इसका ऑब्जेक्ट उठाना है कुछ। तो लेक पे जाने के लिए अपने को यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। अपन लोग इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है ठीक है। नीचे कैसे आएगी? व्हाट फक। German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns.
लग रहा है मैंने गलती कर दी, इसका बाप मर जाएगा। जाके पहले लेक से वो ले आता हूँ फटाफट से। ओके फ़ोटो तो मतलब पहले उसकी बिलोंगिंग ली जाता हूँ जाके, फ़ोटो तो फिर देख लेंगे, लौट के तो आना ही है वैसे भी। सही जा रहा हूँ अभी तक तो। बिलोंगिंग इसकी उधर भी है। हाँ इसी एरिया में होनी चाहिए इसकी बिलोंगिंग्स। चाहिए बोट वगैरह है, ठीक है। बोट मेरे ख्याल से वो आइलैंड पे जाने के लिए है। इसकी बिलोंगिंग्स इसी एरिया में होनी चाहिए ना। ये भी My dress. It could be the element that links my world with that of the lady. It has been here for a few days, in a place that is both mine and hers. AFK, एक मिनट, ज्वाइन कर लियो, टाइम आने वाला है, बस 10-15 मिनट और है। उसको तो पता भी नहीं है, हम लोगों को पता है उसका बर्थडे है।
I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Okay, कैसे communicate करते हैं भाई? Select the word. You need to create the message. Okay. 7 word located. और house, close, road, close road. गूगल ही कर लेता हूँ यार, मारता रहता है टेलीग्राफ। देखो उसने बोला है हाउस कम डिफेंसिव, हाउस ऑन फायर, हाउस वेयर इज हाउस, हाउस ऑन फायर should be here somewhere, comes from position, follow the dot, okay. Town on fire, photo, map, position, near river, over. Okay, मेरे को लिखना है town on fire, tank road near house, over. टाउन सबसे पहले ढूंढना है टाउन, टाउन ऑन फायर, टाउन ऑन फायर, टैंक रोड नियर हाउस, ओवर। टैंक रोड नियर हाउस, हाउस कहाँ है यार, हाउस वेव इज ओवर एंड आउट, वेव इज ओवर, ओवर माई फ्रेंड, ओनली वी आर सपोज टू फाइंड ओवर। Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again. From the beginning. What the fuck? Town on fire. Okay, let's find it.
Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. No, another mistake. I need to focus more and think less. भाई कैसे करना है ये? Press and send dot. Okay, press and hold down to briefly send dash. I need maximum concentration and complete mental silence, or I'll never do this. जल्दी दबाओ तो दिक्कत, देर में दबाओ तो दिक्कत। क्या बकचोदी है। वाह, ओके। इसने जो भेजा है रिसीव्ड, टाउन ऑन फायर, फोटो मैप पोजीशन, फिर से लिखना पड़ेगा, टाउन ऑन फायर ढूंढना पड़ेगा, फोटो मैप पोजीशन। भाई मत पूछे यार, फोटो मैप पोजीशन नियर रिवर ओवर, नियर river over तो ये what? अबे यार इसको वो करना पड़ेगा डिकोड। They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study.
चलो मैं बाथरूम करके आता हूँ। वीसी आ जा, एएफ के वीसी आ फटाफट, टाइम हो चुका है। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is being कौन है? सरदार। हेलो। हेलो भाई। क्या हाल चाल भाई? रात में 12 बजे काम कर रहा है, कॉल पर है भाई अपने टीम वाले के साथ। मैं बोल रहा हूँ भाई इतना क्यों? सही बात है भाई, इतना तो मैं भी नहीं करता यार। कॉल कर रहा हूँ फिर। बहन की टिकी बहन की। अरे बिजी आना 2 मिनट। बीसी में बात, बीसी 2 मिनट बाद आइयो भाई। बीसी पे आओ भाई रात में 12 बजे कौन तू 5-10 मिनट के लिए आ जा, मैं जा रहा हूँ फिर सोने से। काम कर रहा हूँ 2 मिनट में है अरे भाई। 5 मिनट के लिए तो आ जा बस। बोल देना 5 मिनट के लिए थोड़ा जाना है भाई। रात में 12 बज रहे हैं, बोल दे उधर। परमिशन भी नहीं दे रहे। आ जा जल्दी, 5 मिनट के लिए आ जा बस फटाफट से। अभी आ, लेकिन अभी आ जा। ठीक है आ जा। आ रहे भाई। और भाई अश्विन क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई, तू बता। यार पुणे की जिंदगी जी रहा है बहन के टके। पुणे की जिंदगी साला 50 साल बाद तो आया ये वीसी। सच बताइए, सच बताइए, गर्लफ्रेंड बन गई ना? सच बताइए। नहीं भाई, नहीं भाई। सच बताइए। अबे यार झूठ बोलता है आदमी यार। नहीं भाई। भाई तेरी स्टोरियां सिर्फ लड़कियों के साथ होती हैं। अरे तो लौंडे भी होते हैं भाई। मैंने तो नहीं देखी। देखिए उसका एक मतलब लौंडा होता है, वो तू है बहन के टके।
अबे होता क्या है कि लड़कियां ही स्टोरी डालती है, मैं बस रिपोस्ट करता हूँ। दिख जला रहा है और कुछ नहीं है। मैं बस ऐड टू स्टोरी, बाकी ऐड टू लड़के स्टोरी, ऐड स्टोरी टू स्टोरी। तेरे साथ फोटो खिंचवानी है सबको हैं? साढ़े सबके साथ खिंचवा। हेलो हेलो मौके क्या हाल है भाई? और भाई बढ़िया। अबे तो भाई इतना साले जॉब कर रहे क्या तू? इतना रात में क्यों हाँ बुला काम रहे कर रहा हो? हूँ। क्यों? अबे लूजर है क्या? हेलो 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 हेलो, आ गया टाइम पे। यस सालो मेरा आ गया मरवाने 12 बजे। भाई मौकी अगर अभी बॉट बंद है मैं तेरी नौकरी लेने आ रहा हूँ। नहीं बॉट बंदी है। बहुत चल रहा है। ये देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो किधर हो, इधर हो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे डर के लग रहा है खोलने में भाई, सैड भाई। क्यों अरे कर बहुत रहा है बढ़िया। ये? हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे मंकी भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कौन चल रहा है साथ? भाई तू रात में 12 बजे क्यों कर रहा है? इतना काम कौन करता अरे इसको है? कल देना है, इसकी फटी हुई है। तो बोल बर्थडे यार मेरा सेलिब्रेट कर दे तू मुझसे। हाँ बोल आज गांड मारा, आज के लिए नहीं। इसकी बहन की मम्मी कर रहे सही में यार। ब्रैक्स उधर से कैसे आया हुआ है? भाई तो इतनी रात थोड़ी ना हुई है, मतलब तो सुबह हो रखी है। तो टाइमिंग है याद ब्रैक्स? है किसी को विश करने। है? अरे वाह कितना और ये स्वीट देखो। आदमी है। ये अरे भाई, और डीजे ये कहाँ देखो। से आया भाई? आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रहता है। भाई अब तो काम कर सकता है। हैप्पी बर्थडे भाई। ओके सर, मैं आता हूँ करके। तेरा चल क्या रहा है? होगा ये बता। सही में अबे चला गया। सही में चला गया What? हाँ डेफिनेटली हो गया। भाई। What डर the हो गया fuck? कौन लोग? भाई स्लेव भाई। एफ यार। भाई नौकरी मत करना कुछ भी करो भाई। भाई करनी तो ये पड़ेगी। गाना किसने बजाया ये? वो सुन भी नहीं रहा होगा यार। गया वो। हाँ वो तो गया। गॉन। दुखी है क्या आदमी भाई? क्या हो गया उसको? हैप्पी बर्थडे। बड्डा आया बड्डा। 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 भाई ड्रग्स कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सुन रहा हूँ। नहीं ओए अश्विन मोंकी की डीपी लगा सकता है? मॉन्की की डीपी शायद आई गेस फोन में देखता हूँ मैं। लैपटॉप पे तो है बट फोन में पता नहीं। पुरानी वाली लगानी है ना। लगाना भाई, मुझे भी भेज दियो, मैं भी लगा। कोई डीपी नहीं है इस बंदे की, कोई फोटो नहीं है। होगी होगी कोई ना कोई होगी अच्छी सी। अश्विन के पास तो होनी चाहिए। पुरानी देखता हूँ, है मेरे पास फोन पे। थोड़ा गूगल फोटोज ढूंढना पड़ेगा उसको। अरे इसने भेजी थी ना एक बार अलाउंस पे। हैप्पी बर्थडे ने। तो 12 बजे रात को काम आ कैसे सकता है? भगवान जाने यार। काम नहीं होगा, अपने दोस्त की हेल्प कर रहा है। दोस्त की हेल्प कर रहा है। मैं तो साफ मना कर देता, मैं तो कहता पैसे दे भोसड़ी के। के टके हैं भाई। भाई काम। अब आप वापस नहीं आएगा वो? नहीं लगता नहीं, वो सही में गया, सही में गया। वो आधे घंटे से काम कर रहा है। मीटिंग चलेगी तो टाइम मैंने मुझे बुलाया था भाई। मीटिंग नहीं चल रही उसकी, मीटिंग नहीं चल तुम तो रही। करके रहो ऑफिस में अभी। ऑफिस नहीं, अपने दोस्त की हेल्प करवा रहा है वो। तुम लोग क्या कर रहे हो बाकी सब? हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं बस। हम ड्रग्स कर रहे हैं भाई। थोड़ी अश्विन क्या कर रहा है भाई? अश्विन तू तो आता ही नहीं है भाई। कल पेपर है, पढ़ रहा था। दोस्त लोग भी है। आवन अश्विन ने बंदी बना ली और बता नहीं रहा कौन है। अच्छा भूमि कितनी जल्दी बोला है ये। हाय नहीं तेरे हैप्पी बर्थडे ने। ऐसे अश्विन ट्राई कर सकता है। भूमि तो ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है भाई? भूमि क्या ढूंढ रही है बंदा? भूमि ढूंढ रही है सोफा।
कोई नहीं, अश्विन पकड़ जाएगा, भूमि लेट जाएगी। भाई AKS तो लेटा हुआ है ना प्रकृति के साथ। ओह शिट